श्मशानकालिका काली भद्रकाली कपालिनी गुह्यकाली महाकाली पुरपुण्यविरोधिनी कालिका कालरात्रिश्च महाकाली निगम्बिनी कालभैरव भार्या च कुलवक्त्रप्रकाशिनी कामदा कामिनी या कन्या कमनीया स्वरूपिणी कस्तूरीरसलिप्ताङ्गी कुञ्जरेश्वरगामिनी ककारवर्ण सर्वांगी कामिनी कामसुंदरी कामत्र कामरूपा च कामधेनु कलावती कन्या कामस्वरूपा च कामाख्या कुलकामिनी कुलीना कुलभक्त्याम्बा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी कौमारी कुलजा कृष्ण कृष्णदेह कृशोदरी कृष्णांगी कुलशांगी च क्रीडांगी कमलाकला करलास्य करलाली च कुलकांत पराजिता उग्रा उग्रप्रभा दीप्त विप्रचित्र महाबला नीला घना मेघनाद्रा मात्रा मुद्रा मितामिता ब्राह्मी नारायणी भक्ता सुभद्रा भक्तवत्सला माहेश्वरी च चामुण्डा वारही नरसिंहिका वंगांके वंगका कंकाली विमंड संबिनी शिवा मालिनी नरमुंडाली गलद्रक्क त्रिभूषणा रत्नचंदन शीतांगी सिंधुकारण्यमस्तका घोर रूपा घोर दंष्टा घोर घोर तरा शुभा महदंष्टा महामाया सुदंती युगदंतुरा सुलोचना विरूपाक्षी विशालाक्षी त्रिलोचना शारदेन्दु प्रसन्नस्ता स्मिरत्स्मेरम्बुजक्षणा अद्यहस्ता प्रफुल्लस्या स्मेरवक्त्रा सुभाषिणी प्रफुल्ल पद्मवदना स्मितास्या प्रियभाषिणी कूटराक्षी कुलश्रेष्ठा महती बहुभाषिणी सुमतिः मतिश्चण्डा चण्डमुण्डती वेगिनी प्रचण्डा चण्डिका चण्डी चर्चिका चण्डवेगिनी शुकेशी मुक्तकेशी च दीर्घकेशी महाकचा प्रेतदेही कर्णपुरा प्रेतप्राणी सुमेखला प्रेतासना प्रिया प्रेता प्रेतभूमि कृतालया श्मशानवासिनी पुण्या पुण्यदा कुलपुण्डिता पुण्यलया पुण्यदेवा पुण्यस्थूल च पाविनी पुण्यपवित्रा परमा परपुण्यविभूषणा पुण्यनाम्नी भीतिहरा वरदा खड्गपाशिनी विमुण्डहस्ता शास्त्रा च छिन्नमस्ता सुनासिका दक्षिणा श्यामला श्यामा शान्ता पिन्नोन्नतस्तनी दिगंबरा घोररवा श्वेतान्ता रक्तवाहिनी महारवा शिवा शान्ध्या निश्यांगा मदनाथुरा मत्या प्रमत्या मदनासुरा सिन्धु निवासिनी अतिमत्या महामत्या सर्वाकर्षणकारिणी गीतप्रिया वाद्यतरा प्रेतनृत्यपरायणा चतुर्भुजा दशभुजा अष्टदशभुजा तथा कात्यायनी जगन्माता जगती परमेश्वरी जगद्बन्धुर्जगद्धात्री जगदानन्दकारिणी जगद्बीजमयी हेमवती मया मया महालया नागयोगपविताङ्गी नागिनी नागशायिनी नागकन्या देवकन्या गान्धारी किन्नरेसरी मोहरात्रि महारात्रि दारुणाभासुरासरी विद्याधरी वसुमती यक्षिणी योगिनी जरा राक्षसी डाकिनी वेदमयी वेद विभूषणा श्रुति स्मृति कर्महा विद्या गुह्य विद्या पुरातनी चिंता चिंता स्वधा स्वहा निद्रा तन्द्रा च पार्वती अर्पणा निश्चला लीला सर्वविद्या तपस्विनी गंगा काशी शची सीता सती सत्यपरायणा
नितिः सुनितिः सुरुचिस्तुष्टि पुष्टि धृतिः क्षमा वाणी बुद्धिर्महालक्ष्मी लक्ष्मीर्नीला सरस्वती नदी सिन्धुः सर्वमयी तारा शून्य निवासिनी शुद्ध नारायणी मेधा शाकिनी बहुरूपिणी सदानन्दमयी सत्या सर्वानन्द स्वरूपिणी स्थूला सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा भगवन्त्यनुरूपिणी परमार्था स्वरूपा च चिदानन्द स्वरूपिणी सुनन्दानन्दिनी स्तुत्या स्तवनीया स्वभाविनी रङ्किणी डङ्किनी चित्रा विचित्रा चित्ररूपिणी पद्मा पद्मालया पद्मामुखी पद्मविभूषणा शाकिनी हाकिनी शान्ता राकिनी रुधिरप्रिया भ्रान्तिर्भवानी रुद्राणी मृडानी शत्रुमर्दिनी उपेन्द्राणी महेशानी ज्योत्स्ना चन्द्रस्वरूपिणी सूर्यात्मिका रुद्रपत्नी रौद्री श्रीप्रकृतिः उमा शक्तिः शुक्तिर्मती मति भक्तिर्मुक्तिः पतिव्रता सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वाणि हरवल्लभा सर्वज्ञा सिद्धिदा सिद्ध्या भाव्या भाव्या भयापहा कर्त्री हरति पालयित्री शर्वरी तामसी दया तमिश्रायामि निस्ताना स्थिता धीरा तपस्विनी चार्वांगी चंचला लोला जिह्वा चारु चरित्रिणी तपा त्रपावती लज्जा निर्लज्जा हिंग्रजोवती सत्यवती धर्मनिष्ठा श्रेष्ठा निष्ठुरवादिनी गरिष्ठा दुष्ट संहात्रे विशिष्टा श्रेयशीघ्रिणा भीमा भयानका भीमानादिनी भी प्रभावती भागीश्वरी शिर्यमुना यज्ञकर्ती ययुप्रिया ऋक्सामर्थवनीलाया रागिणी शोभनशरा कलकण्ठी कम्बुकण्ठी वेणुवीणा परायणा वशिनी वैष्णवी स्वच्छा धात्री त्रिजगदीश्वरी मधुमती कुण्डलिनी शक्ति रिद्धि सिद्धि शुचि स्मिता रम्भुवैशिरति रमारोहिणी रेवती मघा शङ्खिनी चक्रिणी कृष्णा गतिनी पद्मिनी तथा शूलिनी परिधास्ता च पाशिनी शङ्खपाकिनी पीनाकधारिणी धूम्राशुरभे वनमालिनी रथिनी समरप्रिता च भेगिनी रणपण्डिता जटिनी वङ्गकीणी नीला लवण्या मुद्री चन्द्रिका बलिप्रिया महापूज्या पूर्णा दैत्येन्द्रमथनी महिषासुरसंहर्त्री वासिनी रक्तदन्तिका रक्तपारुधिराकाङ्गी रक्तखर्परहस्तिनी रक्तप्रिया मासरुधिरा सा वा सप्तमानसा गलच्छेन्नितमुण्डली कण्ठमालविभूषणा शवासना चित्तान्तोस्था माहेशी वृषवाहिनी व्याघ्रा व्याघ्राम्बरा चीरचेलिनी सिंहवाहिनी वामदेवी महादेवी गौरी सर्वज्ञभाविनी बालिका तारुणी बुद्ध्या वृद्ध्या माता जरातुरा शुभ्रो विलासिनी ब्रह्मावादिनी ब्रह्मणी मही स्वप्रवती चित्रलेखा लोपामुद्रा सुरेश्वरी अमोघारुन्धती तीक्ष्णा भोगावत्योऽनुवादिनी मन्दाकिनी मन्दहासा ज्वालामुखसुरून्तका मानदा मानिनी मान्या माननीया मदोद्धता मदिरा मदिरोन्मदा मोक्षज्ञया प्रसादिनी सुमध्यानन्तयोगिनी सर्वलोकतमोत्तमा जयदा जित्वराजित्रे जयश्री जयशालिनी सुखदा शुभदा सत्या सभा संशोभकारिणी
शिवदुती भूतिमती विभूति भूषणानना कुमारी कुलजा कुन्ती कुलस्त्री कुलपालिका कीर्तिर्यशस्विनी भूष्यां भूष्या भूतपतिप्रिया सुगुणा निर्गुणा धृष्टा कला काष्ठा प्रतिष्ठिता धनिष्ठा धनना धान्या वसुधा स्वप्रकाशिनी उर्वी गुर्वी गुरुश्रेष्ठा सुगुणा त्रिगुणात्मिका महाकुलीना निष्कामा सकामा कामजीवना कामदेव कलारामाभिरमा शिवनर्तकी चिन्तामणिः कल्पलता जागृति दिनवत्सला कार्तिकी कृत्तिका कृष्णा अयोध्या विषमा समा सुमन्त्रा मन्त्रिणी धूर्णार्हालिदिनी क्लेशनाशिनी त्रैलोक्य जननी हृष्टा निर्भांसा मनोरूपिणी तरागणिं न जठरा शुष्का मांसास्ति मालिनी अवन्ती मथुरा माया त्रैलोक्या पावनीश्वरी वक्त्या वक्त्यानेकमूर्तिः शर्वरी भीमनादिनी क्षेमाग्री शङ्करी च सर्वसम्मोहकारिणी ऊर्ध्वतेजस्विनी क्लिन्ना महातेजस्विनी तथा अद्वैतभोगिनी पूज्या युवती सर्वमङ्गला सर्वप्रियङ्करी भोग्या धरणी पिशिताशना भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्का वशाङ्करी आशा नृत्या चन्द्रकला निद्रिका वयुवेगिनी सहस्र सूर्यसङ्काश चन्द्रकोटि समप्रभा ब्रह्मी मण्डलमायास्ता सर्वतस्ता प्रतिष्ठिता सर्वचारवती सर्वदेवकन्याधिदेवता दक्षकन्या दक्षयज्ञनाशिनी दुर्गतारिणी ईज्या पूज्या विभिर्भूतिः सत्कीर्ति ब्रह्मरूपिणी रम्भिश्चतुरा राका जयन्ती करुणाकुः मनस्विनी देवमाता यस्या ब्रह्मचारिणी रिद्धिता वृद्धिता वृद्धि सर्वज्ञा सर्वदायिनी आधाररूपिणी ध्येया मूलधारणिवासिनी आज्ञा प्रज्ञा पुनन्मश्चन्द्रा मुख्यानुगुलनी बबुदुका निम्ननाभिः सात्या सन्धा दृढव्रता अन्विषिकी दण्डनीति स्त्रयी त्रिद्रिव सुन्दरी ज्वलिनी ज्वालिनी शैलतनया विन्ध्यवासिनी अमेया खेचरी धैर्या तुर्या विमलातुरा प्रगल्भा वरुणीच्छया शासिनी विस्फुलिङ्गिनी भुक्ति सिद्धि सदा प्राप्ति प्राकाश्मा महिमानिमा इच्छा सिद्धिर्विसिद्ध्य च वशित्रिग्र निवासिनी लघिमा चैव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी मनोहरा पीतदिव्या दिव्योदरा मनोरमा पिङ्गला कपिला ज्यूहार संकार सिकारसा सुकुमेड भोगवती गान्धारी नरकान्तका पाञ्चाली रुक्मिणी राधाराध्याभिमाधिराधिका अमृता तुलसी वृन्दा वैष्णवी कपटेश्वरी उग्रा चण्डेश्वरी वीरा जननी वीरसुन्दरी उग्रतरा यशोदाख्या देवकी देवमानिता निरञ्जना चित्रदेवी क्रोधिनी कुलदीपिका कुलभागीश्वरी वाणी मृत्तिका दाविणी द्रवा योगेश्वरी महामाही भ्रामरी बिन्दुरूपिणी दूती प्राणेश्वरी गुप्ता बहुला चमरी प्रभा कुब्जिका ज्ञानिनी ज्येष्ठा भूषुण्डी प्रकटा स्थितिः द्रविणी गोपिणी मया कामा बीजेश्वरी क्रिया शाम्भवी केकरा मे नामो
कुशलास्त्रातिलोत्तमा अमिया विक्रमा भ्रूरा सम्पत्शला त्रिलोचना सुस्थे हव्यवः प्रीतिरुष्मा धूम्रार्चिरङ्गदा तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणी धरा त्रिखण्डा बोधिनी वश्या सकला शब्दरूपिणी बीजरूपा महामुद्रा योगिनी युनिरूपिणी अनंग मदनानंग लेखनंग कुशेश्वरी अनंग मालिनी कामेशी देवी सर्वार्थसाधिका सर्वमन्त्रमयी मोहिन्यरूणानंग मोहिनी अनंग कुसुमानंग मेखलांग रूपिणी वंकेश्वरी च जयिनी सर्वदंत शयेज्जरी षडंग युवती योगा युक्ता ज्वाला सुमालिनी दुरुषाया दुरुधारा दुर्जया दुर्गरूपिणी दुरंता दुष्कृति हरा दुर्योया दुरत्रितमा हंसेश्वरी त्रिकोण्यस्था शाकाम्भ्यरुणुकाम्पिनी त्रिकोण निलया नित्या परमामृतरचिता महावीतेश्वरी श्वेता भेरुंडा कुलसुंदरी त्वरिता भक्त संसक्ता भक्तिवश्या सनातनी भक्तानंदामयी भक्ति भाविका भक्ति साज्वी सर्वसौंदर्य नीलया सर्वसौभाग्यमालिनी सर्वसौभाग्य भावना सर्वसौख्य निरूपिणी कुमारी पूजनरता कुमारी व्रतचारिणी कुमारी भक्ति सुखिनी कुमारी रूपधारिणी कुमारी पूजक प्रीता कुमारी प्रीतिता प्रिया कुमारी सेवका सागा कुमारी सेवकालया आनंद भैरवी बाला भैरवी बटुका भैरवी शमशान भैरवी काला भैरवी पुरभैरवी महाभैरव पत्नी च परमानंद भैरवी सुधानंद भैरवी च उमानंद भैरवी मुक्तानंद भैरवी च तथा तरुणा भैरवी ज्ञानंद भैरवी च अमृतानंद भैरवी महाभयज्री तीव्रवेगा तपस्विनी त्रिपुरा परमेशानी सुंदरी परसुंदरी त्रिपुरेशी पंचदशी पंचमी पुरवासिनी महासप्तदशी चैव षोडशी त्रिपुरेश्वरी महांकुश स्वरूपा च महाचव्रेश्वरी तथा नवचव्रेश्वरी चक्र ईश्वरी त्रिपुरमालिनी राजराजेश्वरी धीरा महात्रिपुरसुंदरी सिंदूरपुरसुचिरा श्रीमन्त्रिपुरसुंदरी सर्वांगसुंदरी रक्ता रक्तवस्त्रोत्रदीयिनी जभायावक सिंदूर रक्तचन्दनधारिणी त्रिकुटस्था पंचकुटा सर्वभूत शरीरिणी चामरी बालकुटील निर्मल श्यामकेशिनी वंगका मुक्तिकारात्न्याढा किरीट मुकुटोज्ज्वला रत्नकुंडल संस्वत्ता स्फुरद्गण्ड मनोरमा पूज्यरीश्वर कुंभोत्या मुक्ता रंजितनाशिका मुक्ता विद्रुममाणिक्या हराढ्या रत्नमाण्डला सूर्यकान्ते तु कान्ताढ्या कान्ता कण्ठभूषणा बीजपुरस्फुरद्बीज दन्तपङ्क्तिरतोत्तमा कामकोदण्डका भुग्न भ्रूकटाक्ष प्रवर्षिणी मातङ्गकुम्भवक्षे जलसत्कोकर्णदेक्षणा मनोज्ञास्तुकुलीकर्णा हंसे गति विडम्बिनी पद्मरागङ्गदा योतिर्दोश्चतुष्कप्रकाशिनी नानामणिपरिपूता
परिस्फुर्जस्थितधिक्त काञ्चनवङ्गरा नागेन्द्रदन्तनिर्माणवलयाचितपाठिनी अङ्गुरीयकचित्राङ्गी विचित्रशूद्रघण्टिका पद्माम्बरपैधाणा कलमञ्जिरशिञ्जिनी कर्पूरगरुकस्तूरी कुङ्कुमाद्रिवलेपिता विचित्ररत्नपृथिवी कल्पशाखी तलस्थिता रत्नदीपसुप्तदत्कसिंहासनविलासिनी पदचक्रभेदनकरी परमानन्दरूपिणी सहस्रदलपद्मानश्चन्द्रमण्डलवर्तिनी ब्रह्मरूपशिवक्रोडाननासुखविलासिनी हरविष्णुविरञ्चीन्द्रग्रहनायकसेविता शिवा शैव च रुद्राणी तथैव शिववादिनी मातङ्गिनी श्रीमती च तथैवानन्दमेखला डाकिनी योगिनी चैव तथोपयोगिनी मता माहेश्वरी वैष्णवी च भ्रामरी शिवरूपिणी अलोम्बुसा भेगवती क्रोधरूपा सुमेखला गान्धारी हस्तिजिह्वा च ईरा चैव शुभज्जरी पिङ्गला ब्रह्मसूत्री च सुषुम्ना चैव गन्धिनी आत्मा योनि ब्रह्म योनिर्जगत योनिरयोनिजा भगरूप भगस्तात्री भगति भगरूपिणी भगत्मिका भगाधरा रूपिणी भगमालिनी लिङ्गाख्या चैव लिङ्गेशी त्रिपुरा भैरवी तथा लिङ्गगीतिः सुगीतिश्च लिङ्गस्था लिङ्गरुधृता लिङ्गमाना लिङ्गभवा लिङ्गा च पार्वती भगवती कौशिकी च प्रेमा चैव प्रियंवदा घृतरूपा शिवारूपा चक्रिणी चक्ररूपा लिङ्गा विधायिनी लिङ्गा प्रिया लिङ्गा निवासिनी लिङ्गस्था लिङ्गनी लिङ्गारूपिणी लिङ्गसुन्दरी लिङ्गगीति महाप्रीत भगागीतिर्महासुखा लिङ्गनाम सदानन्दा भगनाम सदारतिः लिङ्गमाना वण्ठभूषा भगमाला विभूषणा भगलिङ्गामृतप्रिया भगलिङ्गामृतत्मिका भगलिङ्गार्चनाप्रिता भगलिङ्गस्वरूपिणी भगलिङ्गस्वरूपा च भगलिङ्गसुखावहा स्वयंभूकुसुमप्रीता स्वयंभूकुसुमार्चिता स्वयंभूपुष्पप्राणा स्वयंभूकुसुमोत्थिता स्वयंभूकुसुमस्थाना स्वयंभूपुष्पतर्पिता स्वयंभूपुष्पघटिता स्वयंभूपुष्पधारिणी स्वयंभूपुष्पतिलका स्वयंभूपुष्पचर्चिता स्वयंभूपुष्पनीरता स्वयंभूकुसुमाग्रहा स्वयंभूपुष्पयाज्ञाया स्वयंभूकुसुमात्मिका स्वयंभूपुष्पनीचिता स्वयंभूकुसुमप्रिया स्वयंभूकुसुमादाना लालसोन्मत्तमानसा स्वयंभूकुसुमानन्दा लहरी स्निग्धदेहिनी स्वयंभूकुसुमाधारा स्वयंभूकुसुमाकला स्वयंभूपुष्पनीलया स्वयंभूपुष्पवासिनी स्वयंभूकुसुमास्निग्धा स्वयंभूकुसुमात्मिका स्वयंभूपुष्पकारिणी स्वयंभूपुष्पपाणिका स्वयंभूकुसुमाध्याना स्वयंभूकुसुमाप्रभा स्वयंभूकुसुमाज्ञाना स्वयंभूपुष्पभोगिनी स्वयंभूकुसुमोल्लासा स्वयंभूपुष्पवर्षिणी
स्वयंभू कुसुमोत्साहा स्वयंभू पुष्परूपिणी स्वयंभू कुसुमोन्मादा स्वयंभू पुष्पसुन्दरी स्वयंभू कुसुमाराध्या स्वयंभू कुसुमोद्भवा स्वयंभू कुसुमाव्याघ्रा स्वयंभू पुष्पपूर्णिता स्वयंभू पूजक प्राज्ञा स्वयंभू होत्रिमातृका स्वयंभू दात्रिरक्षेत्री स्वयंभू रक्ततारिका स्वयंभू पूजकग्रस्ता स्वयंभू पूजकप्रिया स्वयंभू बन्धकाधारा स्वयंभू निन्दकान्तका स्वयंभू प्रद सर्वस्य स्वयंभू प्रदपुत्रिणी स्वयंभू प्रद सस्मेरा स्वयंभू प्रद शरीरिणी सर्वकालोद्भव प्रीता सर्वकालोद्भवात्मिका सर्वकालोद्भवोद्भवा सर्वकालोद्भवेद्भवा कुन्दपुष्प सदा प्रीतिर्गोलपुष्प सदा रतिः कुन्दगोलोद्भवा प्राणा कुन्दगोलोद्भवात्मिका स्वयंभुवा शिवा धात्री पावनी लोकपावनी कीर्ति यशस्विनी मेधावी मेधा शुक्रसुन्दरी अश्विनी कृत्तिका पुष्या तेजस्ता चन्द्रमण्डला सुष्मा सुष्मा बलाका च वरदा भयनाशिनी वरदा भयदा चैव मुक्तिबन्ध विनाशिनी कामुका कामदा कान्ता कामाख्या कुलसुन्दरी दुःख्यदा सुख्यदा मोक्षा मोक्षादार्थ प्रकाशिनी दुष्ट दुष्टमतिश्चैव सर्वकार्य विनाशिनी शुक्राधारा शुक्ररूपा शुक्रसिन्धु निवासिनी शुक्रालया शुक्रभोग्या शुक्रपूज्या सदा रतिः शुक्रपूज्य शुक्रहोम सुन्दष्टा शुक्रवत्सला शुक्रमुत्रे शुक्रदेहा शुक्रपूजकपुत्रिणी शुक्रस्ता शुक्रिणी शुक्रशक्स्पृहा शुक्रसुन्दरी शुक्रस्थाना शुक्रकरी शुक्रसेव्यती शुक्रिणी महाशुक्र शुक्रभवा शुक्रवृष्टिविधायिनी शुक्राविधेया शुक्रार्हा शुक्रावन्दकवन्दिता शुक्रानन्दकरी शुक्रा सदानन्दा विधायिका शुक्रस्तेवा सदा शुक्रा पूर्णा शुक्रा मनोरमा शुक्रपूजक सर्वस्वा शुक्रानिन्दकनाशिनी शुक्रात्मिका शुक्रसम्पत् शुक्रकर्षणकारिणी शारदा साधका प्राणा साधका शक्तरक्तपा साधकानन्द सन्तोषा साधकानन्दकारिणी आत्मा विद्या ब्रह्म विद्या परब्रह्म स्वरूपिणी सर्ववर्णमयी देवी जपमाला विधायिनी इति श्रीकाली सहस्रनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। दिव्य आत्मबंधुलारा మీకు అనేక నమస్కారములు। दिव्य आत्म बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। जोजी nous venions encore assise dans Godi, dans les bras, sa Mahashakti, sa grand-maman, Mahashakti, nous assise dans les bras et nous peut faire nous bhakti, uduta bhakti, anchigin bhakti. Maman est bien grand. L'eau salate est la même, et maman est bien grand. Tellini minchina deva muledu. मां से बढ़कर कोई देवता नहीं है। Plus grand que maman, pas il n'a même aucun saint, sainte. Sa maman, ce petit bébé, une pipi, mouillé. Sa maman là, les avance sa petit bébé là, les mettait dans sec pour dormir. Lui, il préfère dormir dans mouillé. Get les cœurs, get sentiment. Et maman, l'eau salate là. Maman l'a bien fait, il peut aller manger. Ce petit bébé peut pleurer là-bas, peut crier. Il quitte sans manger là, il galope. Il lève ça, petit bébé là, prend-le dans les bras, il fait lui boire. Maman, à cause de ça, il est grand. Imaginez un petit coup maintenant. Maman, son maman, plus grand maman, grand-maman, Mahakali Mata, vraiment, les grands, les extraordinaires. Imaginez un petit coup, lui, son sentiment, sa grand bon Dieu, dans forme, maman, nous peut guetter. Comment il remplit avec mamta, mamakaram, l'affection, l'amour pour ses enfants. Et nous, nos bons enfants, pour sa grand bon Dieu qui nous peut adorer comme maman. Sa maman là, combien il compte en nous? Il n'est pas coûte rien pour dire à sa maman là, merci. Merci maman pour tout ce que vous faites pour moi. Pas coûte un sou. Donc, laisse-nous dire un grand namaskar avant qu'il nous aille cause sa grandeur. Namaha Shivaya Kalyanyai Shantyai Pushtyai Namo Namaha Bhagavatyai Namo Devyai Rudranyai Satatam Namaha Kalaratriyai Tathambaya Indranyai Te Namo Namaha
सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः। पृथिव्यां या स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीं च या अन्तः स्थिता यमयति वन्दे तामीश्वरीं पराम्। मायायां या स्थिता ज्ञाता मायाया न च तामजाम् अन्तः स्थिता प्रेरयति प्रेरयित्रीं नमः शिवाम्। ओ मामा नमस्कारम प्रणाम। Hier, nous avons causé, nous avons étudié nos Shri Devi Bhagavatam, chapitre 5, comment Durga Mata vient la terre. Et qui fin faire? Après là, nous allons guetter grandeur Kali Mata. Parce que Kali Mata, il y a une grande force extraordinaire. Top, le numéro 1, nous pouvons guetter 10 roues, 10 qualités de la force, 10 grande éducation, 10 grandes connaissances. À cause de ça, numéro 1 de la liste, Kali Mata. Donc, hier, nous écoute Kali Mata même, tu peux répondre à Devi Devta. Quand Devi Devta, tu peux demander, un grand rishi, un grand yogi, peut demander aux mamans qui sont là où. Là, et tu peux répondre. Et là même qu'il dit moi-même, Kali, Zodin pour continuer. Kala dyutpadyate sarva Kala deva vipadyate न काल निरपेक्ष ही क्वचित किंचिद वद्यते। En fait, tout est né depuis dans Kal. Tout est né depuis dans Kal. Et finalement, tout pour rentrer dans Kal et pour disparaître net. Ça, l'univers, tout ça, une planète, tout ce qui nous peut trouver, tout pour disparaître un jour et pour rentrer dans Kal. Après tout pour finir, mais Kal et Kali, je continue à rester. Donc, le monde est sous contrôle Kal et Kali. Mais Kal et Kali, je ne pas sous contrôle Kiken. Kal, Kali. Nous prenons un par un. Kal, Mahakal. Pour commencer, nous pouvons dire Kal veut dire Shivji. So féminin pour venir Kali. Mahakal, grand Shiv. Nous disons Mahadev. Grand Shiv,
Mahakal, Mahakali. Donc, Kal veut dire l'amour, mortalité. Kal veut dire l'étang. Comme ça, Kal, il y en a beaucoup de significations. Là, pour le moment, nous pouvons prendre juste ça en deux significations. Kal veut dire l'amour, Kal veut dire l'étang. Kal Deva Swarupam. L'étang même bon Dieu. Bon Dieu même l'étang. L'étang bon Dieu. Kal Deva Swarupam. L'étang, si une personne l'y assise, l'y réfléchit bien, l'étang qui était, si nous pas respecter l'étang, si nous pas adorons l'étang, et si nous pas utilisons l'étang, nous qui gros perdants. Nous-mêmes qui tombons dans le trou, nous tombons dans le piège. L'étang est une grande affaire. Et l'étang, comme dit, pour calculer l'étang, il n'est pas facile. Un grand rishi, mouni, yogi, ils rentrent dans notre laboratoire méditation. Ils essayent de trouver une façon comment pour calculer l'étang, comment pour compter l'étang. Il n'est pas facile. L'étang, il n'est pas nous trouver, il n'est pas une chose qui nous trouve en lisier. Comment vous contrôlez les temps? Comment vous comptez les temps, calculez les temps? Ça, bon Dieu, là, facile, ça. Pour trouver même pas trouver. Les temps aussi, nous pas trouver à cause de ça. Kala Deva Swarupam. Lui-même, bon Dieu. Hier, nous avons causé un petit peu de chakram. 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 Ça même ça disque. Ça la roue. Coupe les coups. Ban Rakshas. Il y a 24 lames là-dedans. 24 lames bien fitées. Ça nous dit une signification qu'il y a une arme, qui coupe les coups. Ban Rakshas. Et nous guettons sur l'autre côté 24 lames, 24 cannelés, 24 lames, veut dire 24 heures de temps. Dans un jour, nuit et jour, 12, 24. Et dans 24, les temps. Et les temps, les dans la main, les dans les doigts, comme dit. Les temps n'est pas dans la main qui gagne. Les temps n'est dans la main bon Dieu. Comprends. Ça même qui appelle calme. Maintenant, nous tous nous connaissons. Un abhuta calme, le passé, vartamana calme, le présent, bhavishyat calme, le futur. Et il y a une autre qui appelle Tadharma Kalam. Ça, une autre qualité, les temps. Mais tout ça là, nous avons Rishi Muni Yogi, il fait ça pour calculer les temps, sinon il n'est pas facile. Maintenant, nous pouvons get ça féminin, sa grande force qui nous peut dire Kali. À cause de ça, nous pouvons dire tout est sorti depuis dans les temps. Tout est sorti depuis dans Kali. Une maman qui est capable d'avoir une dizaine d'enfants, tout est sorti depuis dans son ventre. Comme ça même, tout ce qui nous peut trouver, tout ça, dans la planète, tout ça, dans
galaxie, tout grand univers, tout ce qui nous peut trouver, tout une sortie depuis dans Maman Kali. En dehors li pena, tout une sortie depuis dans lit. Et ce qui est joli, pareil comme ça la rien là. Tout du fil une sortie depuis dans lit. Il met ici une crosse là-bas, finalement, après il jouait dans sa du fil là même. Elle n'a rien. Et finalement, il ramasse tout, il ramasse lui dans le lit. Comme ça même ça. Mahakali, tout une sortie depuis dans le lit, tout ce qu'il nous peut trouver, finalement, tout rentre dans le lit, il ramasse tout. Donc, ça, pour sa grand-maman là, Mahakali, nous pouvons se poser. La bouche petite, lit beaucoup grand. Sa shabdena shavaha proktaha shanam shayana muchyate nirvachanti shmashanartha mune mugdartha kovidaha. Shivji, Mahadev, les contents restent dans le cimetière. Shivji, il prend la sanne. Quand du monde finit mort, il finit brûler, il fait crémation. Il prend ça la sanne là, il frotte l'eau partout. Kali Mata aussi, les contents restent dans le cimetière. Car l'amour, quand on parle de l'amour, il y a une connexion avec le cimetière. Ici, Shabdena Shavaha Proktaha Shanam Shayanam. Shav veut dire shaw. Shav veut dire shaw. Cadavre. Shayanam. Dormi. En place. Quand met cadavre dormi. Sa place la même qui est là, sa place la même appelle Smashanam. Smashan. Et Shivji content reste là-bas. Kali Mata aussi content reste là-bas. Et cette place, tous les 5 éléments, je devine, comme du causé, termine notre course dans le cimetière. Parce que quand il brûle sa cadavre là, divan prend ce bout la terre, prend ce bout de l'eau, il prend ce bout l'espace, il prend ce bout du feu, il prend ce bout parce que ça, la nature là même, il a arrangé avec 5 éléments. La terre, comme on fait que Dieu là, la terre, du feu, l'air, etc., etc. La 5 qui m'ont dit là. Ça, l'école là aussi, il a arrangé avec ces 5 éléments là. La terre, de l'eau, du feu, l'air, l'espace. Alors, quand on brûle ça l'école là-bas, c'est à qui? Prend ce pas, la terre pour prendre ce pas, l'air pour prendre ce pas, c'est à qui? Ça veut dire, ça 5 éléments là, pas juste cadavre qui a dormi là-bas
dans le cimetière, mais tout ça, 5 éléments là aussi, je t'ai fini là-bas. Fini. À cause de ça, Kali Mata, il est content, reste dans le cimetière. Peut-être dans Maurice, beaucoup de monde ne connaissent, surtout mon cause pour hindou. Ici, comme on peut dire hindou, Tamil, Telugu, Hindi, Marathi, Gujarati, tout hindou, hindou. Langue ancestrale, ça. Mais, nous, Vedic Sanatan Dharma l'Inde. Dans l'Inde, pour cimetière, je ne veux pas dire cimetière comme ça. Je veux dire Rudra Bhumi, Mahadev Bhumi, Shiv Bhumi, dans l'Inde. Dans Maurice, beaucoup de monde ne connaît. Je peux dire des cimetières. Qui fait? Parce que Rudra Bhumi, ça, Shiv Bhumi, Kali Mata Bhumi, Kali Devi Bhumi, cimetière. Nous causons une petite parole avant de continuer. Bien conseillé, nous livres sacrés, quand quelqu'un est décédé, faire sa crémation. Pas une conseillée pour enterrer. Bhasmantam Shariram. Dans nous Yajurved Indien, encore dans les autres Veds, nous dans Shastra aussi Indien. Quand ça Atma-là quitte l'écho, allez, Bhasmantagum Shariram. Bhasma, fais-lui vin lasan, brille, fais sa crémation. Antyeshti Kriya. Daha Sanskar. Brûler, pas enterrer. C'est moi nous respecter les autres religions, les autres bonnes personnes. Chacun a sa culture, chacun a sa religion. Pour nous, dharma, ça. C'est nous dharma. C'est nous duty. C'est nous devoir. C'est nous dharma, karma. Pour faire crémation, brûler. Et quand brûler même, Kali Mata assisé, Shivji assisé, et il prend sa lasagne là, il frotte l'eau. Kali Mata aussi frotte l'eau partout. Il baigne avec sa lasagne là. À cause de ça, sa personne là, quand même qui façon il gagne un des pourcentages du bien avec ou l'écho qui brûle une vine lasagne, Mama Kali peut arrose l'eau, peut baigner comme dit causé, Shivji peut frotter l'eau. Vous connaissez qui était ça? Qu'est-ce sa grandeur? Nous livres sacrés. Et pas fini. Avant qu'il me continue encore. Nous culture dire, les où gagne l'occasion, et redou l'occasion, à l'assise quand même pour 5 minutes dans le cimetière. Ça qui nous culture. Qui fait? Parce qu'il là-bas, il y a un grand faisaire peut dormir. Ici, repose un tel. Il peut reposer. Il vient la terre, il vient la poussière. Quand ce bout, tu peux déclarer, ça, mon grand, la terre, ça, moi, dans autant la terre, moi, dans avion, roquette, etc. Quand il était à ce là dans le cimetière. Ou riche, ou pauvre, qui ont été, ou dernier lagar. À l'assise dans le cimetière pour quand même 5 minutes. Et assiser, guetter, quand on assise. Il y a une tranquillité là-bas. C'est moi sa tranquillité là. Il n'y a pas une tranquillité. Comment dire, on assise dans un ashram, ça. Il n'y a pas ça. Tranquillité, ça, la paix. Juste pour faire ou connaître, ça même au dernier lagar, pas faire faisaire, pas faire l'arrogance. Kali Mata, il là-bas, il peut tout.
Nous continuons. Kali Mata est dans 3 Shakti. Un peu spécial. Numéro 1, Jnana Shakti. Numéro 2, Icha Shakti. Numéro 3, Kriya Shakti. Jnana Shakti, Icha Shakti, Kriya Shakti. Nous venons numéro 1. Gyan, la connaissance. Si un monde peut dans sa Shakti, connaissance, qui le peut faire dans ce monde là? Qui le peut connaître? Connaît la même appel? Gyan. Et imaginez un petit coup, si un monde ne connaît, il ne connaît, mais quand il peut avoir Icha, Icha veut dire un désir, l'envie, allez, Icha, l'envie. S'il ne connaît pas affaires, comment il peut avoir l'envie? Quand une personne, il apprend, ça l'auto là, un Mercedes ça l'auto là, il y a un Audi, ça une auto extraordinaire, on donne comme ça, il est confortable, ça, maman. Mais quand il connaît ça, ça l'envie là venir. Les là qui itcha, un exemple on peut donner, il pas juste l'auto, pas juste une voiture, quand même qu'ils affaires en général, quand on connaît, quand on a sa connaissance là, les là où l'envie là venir pour gagner à ce terre. Icha Shakti. L'air, on gagne ça l'envie là. Troisième, qui est arrivé là? Kriya Shakti. Là où elle met en action maintenant. Où elle met en action. Où elle travaille pour ça. Pour gagner. Mais bien dans la connaissance. Ça, Jnana Shakti, Icha Shakti, Kriya Shakti, sa Shakti dit dans la main Mama Kali. Sinon, en place, ou pas une connaissance même. Si Lili ou ou pas pour gagner connaissance là aussi. Ça c'est la grâce qui, comme dit Cosé, il fait ou gagner sa connaissance là. Qu'est-ce la même là? Nous gagnons connaissance. Sinon, nous pourrions rester dormir même. Comment nous réveiller? Qui est là qui réveille nous? Quand on dit que nous allons dormir, il dit qu'on peut dormir. Mais pour lever, qui est là qui lève lui? Comment il gagne sa connaissance là? Ah, ouais. Molo Lili là, ouais, mon bien dormir. Mais tu ne peux pas rester dormir même, fini. Un simple exemple. Comme ça même on gagne connaissance grâce à sa maman là. Sinon, qui s'en a tu pour lever? Qui vient lever aussi? Pas pour lever ou combien de fois il est arrivé? Il y a du monde dans profond sommeil, peut lever lui-même. Il parle de VM, il faut dire sa grande force qui nous peut dire Kali Mata. Levez-vous ou gagnez connaissance. Kali Mata, il y a un sable, un gros couteau, un gros sable dans la main. Et ce sable là, bien fité. Et ce sable là même appelle sable la connaissance. Avec ça sable là même, les touilles numéro 1, comme dit Cosé, lui-même, chef, lui-même les rois démons. Remarquez, dans la main, Kali Mata, elle a un sable bien fité, du sang peut couler. Dans l'autre la main, une trappe, un rakshas, un démon,
Une trappe, il pense au CV puis à pendant comme ça. Sur la tête, il coupée et du sang peut couler. Et dans l'autre la main, ce sable bien fité. Ça, la tête coupée, ça rakshas là. Qui s'en là ça? Lui-même, Ahankaram. Avec sable, la connaissance, fité, coupe les coups, coupe la tête. Ahankaram. Ego. L'arrogance. Et pas fini quand tu y lis. Il y a encore 7 en lit là. Qui sont l'autre 7 là? Dvesham, Samshayam, Lajja, Ninda, Bhayam, Krodham, Lobham. Seulement, quand on récit coupe la tête, ça démon qui appelle ego, l'arrogance, avec sa sable fité, la connaissance, les là, il facile pour couper ça l'autre 7. Parce que ça 7 là, il est entouré avec ego, démon, ahankaram, dvesham, vengeance, rancune. Samshayam, doute, doutance, doute. Lajja, la honte. La honte, pour faire un mauvais travail, ça l'est bon. Mais la honte, en général, pas bon. Lajja, la honte. Ninda, trahir au prochain. Trahison. Bhayam, frayeur, peur. Krodham, colère. Lobham, gourmandise. Donc, tous les 7, y compris Ahankaram, fait 8, ça a besoin couper avec la connaissance. Sable. Ça sable la connaissance quand même, qui pour coupe les coups, coupe sa bande là, détruit les autres. Sinon, ça, 8 qui nous peut mentionner là, ça bande la même, et un, comme dit causé, et l'autre colonel, comment je dire, l'autre commandant, l'autre tel affaire. Ça 8 la même ça. Et top. Ahankaram. Get Brahmadev qui lui dit à propos Kalimata. Brahmadev. Mahakalim Trinayanam Nana Bhushana Bhushitam Nilanjana Samaprakhyam Dasha Padananam Bhaje. Brahmadev dit Kali Mata il a 3 lisiers. Et il y en a beaucoup de qualité bijoux, ornaments. Toute qualité bijoux. Toute qualité ornaments. Il est éclairé bien. Il est éclairé. Et ce ban ornament, ce ban bijoux éclairé, bleu. Kalimata a 10 figures. Et beaucoup la main les pieds liena. Kalimata. Ça fait nous penser un petit peu. Rigved, soit un mantra bien joli, meaningful. Sahasra Shirsha Purusha, Sahasraksha Sahasrapat,
Ça bon Dieu là, il y en a beaucoup la tête, beaucoup figure, beaucoup la main, beaucoup les yeux, beaucoup la main, beaucoup les pieds, beaucoup les oreilles. Ça fait nous apprendre une grande leçon, nous besoin tirer une grande leçon. Nous pensons, bon Dieu, existe dans le mandir, existe dans le Covid, existe dans le chevalet, existe dans le mandiram. Non. Sahasra Shirsha. Sahasra Aksha, sur les yeux partout, sur les pieds partout, sur les oreilles partout. Fais attention. Nous bien guetter bien qui nous peut faire. Ou capable en bête qui ken. Là où peut contraire au prochain. Ou peut mal cause au prochain. Ces oreilles là. Ou peut coquin qui ken. Il peut guetter tout bien sur les yeux là-bas. Ou galoper ou aller dans la lune. Sur les pieds là-bas aussi. Sur les yeux là-bas, sur les oreilles là-bas. Quand même, quand tu peux aller là-bas. Isha vasyam idam sarvam. Isha vasyam idam sarvam. Yajurved, chapitre 40, premier mantra. Isha vasyam idam sarvam. Sa bon Dieu là, il est omniprésent. Sa présence partout. Donc, il demande pour réfléchir. Alors, Brahmadev peut dire, Mahakali, oh Mahakali, vraiment, Mama Kali, les grands, les super, les top, extraordinaires. Pour commencer, il dit, il y a 3 lisiers. Qui sont 3 lisiers? C'est qui sont maman là, non? Lisier numéro 1. Dayamai Drishti. Numéro 2. Varadatri Drishti. Numéro 3. Samhar Kartri Drishti. Ça 3 lisiers spécial, extraordinaire. Kali Mataina. M'aurait dit Dayamai Drishti. Il y a un regard, il y a un lisier, compassion. Beaucoup l'amour pour ces bons enfants. Et comme on peut dire, pour ces bons enfants, pas juste du monde. Juste du monde, pas aux enfants. Toute créature, ces animaux, ces oiseaux, tout. Qui sont bons arbres, tout ça là, est dans la vie. Tout. D'ailleurs, moi, Drishti. Sa maman là, comment moi tu commences, moi tu peux dire, maman là, ça la terre là même, les quittes sont mangés, les galoper quand ça, tu bébé là peut pleurer. Imagine un petit coup, combien l'amour il y en a, combien Mama Karam, Mamata, l'affection. Numéro 2, Varadatri Drishti. Tout le temps, il prie pour lui donner. Pour lui donner Vardan, lui donner don. Don, tout qualité de don. Qui don ou lui donner. À cause d'une donnée même, aujourd'hui, nous pouvons profiter de tout ça là. Est-ce que du monde a créé quelque chose? Du monde qui a créé. C'est un micro qui, là, je peux causer là, je peux prononcer des bonnes paroles, c'est un micro. Du monde a créé ça. Il a assemblé un petit bout de ferraille, un petit peu par ici, par là. Sans meuble là, allez, assis dans un sofa, allez,
du bois. Il assemble bout de bout du bois, il fait sa chaise là, il fait sa sofa là. Mais est-ce qu'il lui-même, il arrange du bois là, il arrange sa pied là? Du monde qui assemble tout ça dans affaires là, les là qui peut gagner sa forme. Même ça livre là aussi. Aujourd'hui, il y a un livre sacré, Devi Bhagavatam. Ça papier là, quand il sorti. Quand il sorti. Aujourd'hui, il sorti depuis dans le pied, il tient la peau, il travaille ça comme ça. Mais est-ce qu'il y arrange sa pied là? Est-ce qu'il y arrange la peau dans le pied là? Il a assemblé ça, aujourd'hui, il vient comme ça. Mais, donner, vrai donateur, sa personne qui donnait là, sa personne là, pas qui s'en a ça. Mahakali, sa Mama Kali, lui, il fin donner. Là où on peut envie faire ça, ou peut faire ça, ça ou content. Il donne nous ça la terre là pour vivre. Ou peut planter, ou peut nettoyer, ou peut arranger ça. Ça roche là même ou pas arranger, mais ou peut arranger la case. Vrai donateur, sa maman là, Mama Kali, à cause de ça, il dit, Varadatri Drishti. Il y a un regard, un amour pour donner. Nous ne nous comprenons, prend. Merci aussi, nous ne pouvons pas dire, mal élevé. Ingrat. Ne prend. Et dire merci, ça bon Dieu là. Quand quelqu'un donne nous un montre cadeau, merci, thank you. Dans tout langage, vous dire merci. Aïe, Zoli, merci beaucoup. Hein? Sa maman là, il donne nous tout ça là. Mais non, aucun merci. Ne prend à l'aime. Numéro 3. Samhara Kartri Drishti. Samhara. Tuer. Les tuer qui sont là. Elle a sable dans son main. Les coups. La tête démon est coupée. Démon là. Il n'est pas tout bon du monde. Il protège ce dévot. Définitivement, ce qui a vers sa maman là. Il pour protéger, définitivement, il pour protéger. Parce qu'il est lui-même vrai sauveur, lui-même vrai protecteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands du monde, ils ont l'argent, ils ont power, pouvoir, alors ils ont bodyguard. Bodyguard, dans l'Inde, Shrimati Indira Gandhi. Qui est là qui titouille? Pas au bodyguard même. Bodyguard, dans son mot même. Bodyguard. Il surveille sur l'écho. Surveille sur l'écho, il y a un peu de touille sur l'écho. Une touille. Une grande madame comme Shrimati Indira Gandhi. Mais qui confiance ou est du monde qui protège, du monde qui. Du monde qui peut guérir, du monde qui peut sauver la vie. Non, vrai protecteur, vrai sauveur, sa maman là. Et pas oublier, sa maman là, son ministère de la justice. Personne pas pour saper en dit ça. Si on fait un vilain, si on fait une gaffe, on commet une bêtise, on ne peut pas vous saper. Mais seulement pour ce bon dévot, il est bien douce, calme. Il n'est pas pour venir dans sa bayan karoup, dans sa forme faire père. Pour un rakshas qui vient dans sa forme faire père. Long la langue in soji, sab fité dans son lame. Lion noir. Un tigine sur les dents paraît blanc, la langue rouge, on dirait du feu, volcan qui peut sortir depuis dans son langue. Et ça roule, ça forme là, juste pour un rakshas, après divan rakshas, ou pas qu'à faire jolie figure. Ou faire jolie figure,
ou en colère, quelqu'un qui commet une bêtise, ou devant lui, ou peut rier, ou ont du monde. Non, sa maman là aussi comme ça. Les bisins craquent, ça démon là. Les bisins, ça démon là, bisins trembler. Soit disant, il peut faire tout ban richi, mouni, yogi, ban bhakta père. Quand sa maman là paraît, tout get tout à faire mon noir. Alors, ça même qui appelle samhar. Samhar veut dire tuer, vad. Samhar, kartri drishti. Il protège son ban bhakta et il tue ban rakshas. Imagine bien, Fodé coupe la tête à Hankar, Léla, ou pour gagner bénédiction, sa maman là. Si vous pas coupe la tête à Hankar avec ou sab, ou l'épée, la connaissance, si vous pas coupe les coups, coupe la tête, démon, Hankaram, ego, l'arrogance, jamais vous pas gagner une bénédiction sa maman là. La même sa maman là compte en haut. Et sa maman là, en retour, sa gâteau, sa cadeau qui vous donnait là, top. Vous connaissez qui sa grand gâteau? Pas sa gâteau ordinaire dans sa le monde là. Un petit moment, on mange, on enjoy, après on finit. Ça, gros gâteau qui nous peut causer là, moksham. Moksham, je ne connais pas beaucoup d'intellectuels dire moksham veut dire libération. Je ne pas trop comprendre ce langage là. Moi, je peux dans le même langage pour exprimer, parole pour exprimer, moksham qui était synonyme mukti. Quand ça atma là qui s'allait là aller, il pas retourne dans ça le monde pourri. Quand il y allait, sa Mahashakti, sa grand-maman là, Mama Kali, donne-lui une qualité permis. Il promenait dans tout ça galaxie là, il promenait dans tout ça l'univers là, il promenait partout dans toute création bon Dieu, partout. Et il est content, il vient côté bon Dieu, il assis côté sur les pieds, il dialoguait avec bon Dieu. Vous connaissez qui était ça? Ça même qui appelle ça Mokshanandam. Un Anandam. Ça aussi, je dis en anglais, Anandam, bliss. Je ne peux pas trop croire là-dedans. Anandam veut dire bliss. Bliss, pas un mot, pas aucun langage dans ce monde-là pour capable exprimer clair qui veut dire moksham. Peut-être un jour, d'après nos livres sacrés, comment ils décrivent moksham et un atma, une lame, quand il quitte la vie là, il y allait, et il réussit à gagner son moksham là, quand il y allait, comment il était, qui arrive lui, peut-être une prochaine fois, nous sommes capables de faire une bonne réflexion là. Aujourd'hui, nous voulons dire, Kalimata, il est extra content, ce dévot, c'est qu'il prend sab. La connaissance, il coupe les coups, coupe la tête, Ahankaram, ego, l'arrogance. Et il donne sa cadeau là, moksham. Remarquez, dans un lame, un sab pour Kalimata, un autre lame, la tête coupée pour démon, Ahankar, ego. Et il y a un autre lame, il fait comme ça. Il peut donner bénédiction. C'est même qui appelle Abhaya Hasta, Varda Hasta. Varda, il donne var, il donne ce blessing, ce ashirvadam, ce bénédiction, ce la grâce.
Et garantie, lui dire pas tracasser, moi avec toi. Vous connaissez qui était ça? Dans l'Ikou, Mahakali maintenant, nous pourrons remarquer, il y a un monde là. Dans Shivji aussi sur l'Ikou. Parfois dans quelques photos, nous trouvons il y a un monde là. Mais dans Kali Mata sur l'Ikou, pena har, pena guirlande, fleurs, il y a un filet crâne. Compris, kapalam. Elle a 51. 51 filets, crâne, crâne pour sa bande rakshas là. 51. C'est bien meaningful. Et ça crâne là, même ça crâne, man rakshas là. Ici, sur l'autre signification, parmi toutes les langues qui est dans le monde, mon temps de parler, il y a plus ou moins 200 langues dans le monde. Laisse-nous dire dans 300 langues aussi, langage du monde causé. Pas aucun langage capable de comparer avec la langue sanskrit. Sanskrit, lui-même maman, tout langage. Elle fait une bonne réflexion qui était, je ne vais pas mentionner qui langue, mais une langue, quand même il y a une langue européenne, mais on trouve son route, son racine, sanskrit. L'Est, l'Ouest. Les Nord, les Sud. Quand même qui pays. Vous êtes basé dans sa langue sanskrit. Et sanskrit, lui-même maman, pour toute bonne langue. Plus vieux livre, ancien livre dans ce monde là, trouve dans Paris, grande librairie là-bas. Bibliothèque. Et qui ça livre sacré là, ça? Il y a un livre pour nous, Rig Veda. Et Rig Veda, il y a en sanskrit. Tout ça là peut montrer qu'on pas tient aucune langue. Tient en langue sanskrit. Et langue sanskrit, il y a une langue bon Dieu causé en langue sanskrit. Tous nos bandes Devi Devta causé en langue sanskrit. Parce que sanskrit, c'est une langue, son nom même sanskrit, raffiné, sanskrit. Raffiné, une langue raffinée. Pareil comme aujourd'hui, beaucoup de monde dans d'autres la case, on met un, comment on appelle ça, pour raffiner de l'eau là. Hein? Filtre. Filtre pour gagner de l'eau propre, pure. Mais comme ça même, sanskrit, c'est une langue, il passe d'un filtre, il vient la langue sanskrit. Vedic Bhasha, Veda Bhasha, sanskrit. Mon père voulait dire, dans la langue sanskrit, il y a 51 alphabets, 51 lettres. Et ça, il est bien riche. Bien riche. Alors, il symbolise ça. Sa maman là, il donne nous la connaissance, science, l'éducation à travers la langue sanskrit. C'est la langue qui est capable de nous, donne le monde, la connaissance, science, l'éducation.
sa maman là qui donne nous ça. Il donne nous sa pouvoir là, sa power là. Om. Om. Om Ya Devi Sarvabhuteshu Kali Mata Rupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Demain, nous pourrons continuer avec Vini, nous tous ensemble. Encore nous assises dans Godi, les bras. Sa grand-maman, sa Mahashakti, sa grande force, Kali Mata, nous assises dans les bras. Dhanyavadam, Dhanyavad, Nandri, merci. कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोचनि घोररते तनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विलासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभभञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मातृनिराकृति धूम्रविलोचनि धूम्रसिके समरविशोणित बीज समुद्भव बीजलताधिक बीजलते शिव शिव शुम्भनि शुम्भ महाहव दर्पित भूत पिशाचपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते खंडित कुंडली तुंडित मुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण खंड पराक्रम सौंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड निपातित मुंड
रम्यकपर्दिनि शैलसुते हयरणमर्मरसात्रवदोर्धुरदुर्जय निर्जय शक्तिभृते चतुरविचारधुरेण महाशिव दूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मद दानवदूत दुरन्तगते जय जय